हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट पार्ट रे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट रो कॉस्ट कांसेप्ट और कॉस्ट शीट विषय डिस्कस करथिले, तार फॉर्मेट विषय जानथिले और किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करथिले। आज आउ किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिया। तो वीडियो को एंड जाए देखंतु, भल लागले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु। चलंतु अभी का आपन बुक रो क्वेश्चन नंबर 10 करिवा। तो देछि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। किछि इंफॉर्मेशन देछि मटेरियल कंज्यूम 12000, labor cost 22,800, works overhead 100% of the labor cost, office overhead 25% of the work cost. Number of cabinet manufactured is 400. Also determine the selling price per cabinet if the profit is 20% on sales is desired. Okay, हमको profit इची 20% sales, but first हमें कौन बार करिया cost determine करिया, तापर हमें profit calculation करिया. Okay, तो first हमको कौन इची material consume. मेटेरियल कंज्यूम केते अछि 12000। मेटेरियल कंज्यूम रे आड करबा डायरेक्ट लेबर बा जोटा कि लेबर कॉस्ट देछि। मेटेरियल कंज्यूम रे लेबर आड करले कोन बारे प्राइम कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट देछि 22800 ओके 800 224 213 34800 मोर कोन भाला प्राइम कॉस्ट। ओके प्राइम कॉस्ट रे कोन ऐड करिवा फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट रे कोन ऐड करिवा फैक्ट्री ओवरहेड। कोन दिछि फैक्ट्री ओवरहेड देखो जोरा कि वर्क्स ओवरहेड कहि परिबा, फैक्ट्री ओवरहेड कहि परिबा 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर का देतला 22800। तो 22800 100% इज 22800। 0 0 8 8 16 4 2 6 7 3 2 5 57600 मोर कोन वाला ना वर्क कॉस्ट, कौन वाला वर्क कॉस्ट। ओके फर्स्ट मटेरियल कंज्यूमर लेबर ऐड कली, मटेरियल कंज्यूमर लेबर ऐड कली मोर कौन वाला प्राइम कॉस्ट वाला। प्राइम कॉस्ट रे हमको देइतला वर्क्स ओवरहेड 100% ऑन लेबर रे जेती खर्च होइछि वर्क्स ओवरहेड भी सेती खर्च होइछि। ओके तो 34800 22800 ऐड कली मोर 57600 वाला जोटा कि मोर वर्क कॉस्ट। तापर ऐड करबी ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड इछि 25% वर्क कॉस्ट। तो 2500 इक्वल 57600। ओके काटिली 4 4 के 4 17 416 1 के 416 14400 ओके 0 0 6 4 10 1 के 5 7 4 11 के 12 5 के 72000 केटा असला 72000 मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट कॉस्ट। ओके आउ किछ इन्फॉर्मेशन देइन माने आपको हमें टोटल कॉस्ट कही पारिया। ओके तो कौन कली वर्क कॉस्ट ऑफिस ओवर ऐड कली, ऑफिस ओवर कौन दिखला 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 57600 25% बाहर कली 14400 टोटल ऐड कली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72000। ओके 72000 तापर मेंशन करछि आल्सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर कैबिनेट इफ द प्रॉफिट इज 20% सेल्स। तो टोटल कॉस्ट में ऐड करिया प्रॉफिट जोरा कि 20% ऑन सेल्स देछि 20% ऑन सेल्स, बट आम प्रूव करते 20% सेल्स इक्वल टू 25% कॉस्ट। जिते हमको कहीं हमको सेल्स इनफॉरमेशन दे ना, सेल्स इनफॉरमेशन दे ना। तो जिते सेल्स इनफॉरमेशन न दे तो मन रखिए 20% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 25% कॉस्ट। तो 25 बाहर कर 25/100 इंटू 72000 4 4 के 4 3 32 4 18000 ओके 18000। तो 72000 मोर प्रॉफिट केते असला 18000 72 + 8 90000 ओके एटा मोर असला सेल्स। ओके तो सेल्स अमाउंट इज 90000 मतलब सेल्स ऊपर 20% कटला तो 90000 20% केते 18000 ओके। आमे तळे मेंशन करतला आल्सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट इफ द प्रॉफिट इज 20% सेल्स डिजायर्ड। नंबर ऑफ कैबिनेट मैन्युफैक्चर्स 400। नंबर ऑफ कैबिनेट आमे 400 टा कैबिनेट मैन्युफैक्चर करछे तो तार सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाहर करिवा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ कैबिनेट। ओके टोटल सेल्स अमाउंट इज 90000 डिवाइडेड नंबर ऑफ कैबिनेट 400 डीटा 0 कटिला 4 कटले 2 4 to 8 10 2 5 225 होची सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आम एठी जो प्रोडक्ट बनइले प्रोडक्ट नंबर ऑफ कैबिनेट 400 तार कॉस्ट डिटरमाइन कले 72000 क्वेश्चन इनफॉर्मेशन प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बट हमको सेलिंग प्राइस जन जिते 20% ऑन सेल्स देथिबो तो मन रखियो कॉस्ट 25%
ओके सेल्स 20% जेतिक अमाउंट कॉस्ट 25% सेतिक अमाउंट ओके तो कॉस्ट आमको कॉस्ट जन अच्छी तो 25% कॉस्ट 72,000 25% बाहर कली तो मोर भाला 18,000 7,000 होची कॉस्ट 18,000 प्रॉफिट टोटल सेलिंग प्राइस होची 90,000 आम पचारला सेलिंग प्राइस पर यूनिट मो पाखे 400 टा कैबिनेट थिला तो ईच कैबिनेट रो सेलिंग प्राइस होची कोन कर टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देले मोर 225 ओके एई बोले हम कॉस्ट प्रिपेयर करियो चलंतु अभी आउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिवा आपनक बुक रो क्वेश्चन नंबर 15 following informations have been obtained from the records of the manufacturing concerns dita date देछि गोटे होछि 1 जनवरी 2022 और राइट डेट देछि 31 डिसेंबर 2022 जोरा 1 जनवरी दैट इज ओपनिंग स्टॉक और जोरा 31 क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक और रॉ मटेरियल अछि 30 ओपनिंग रे क्लोजिंग रे अछि 35 वर्किंग प्रोसेस रे अछि 15,000 ओपनिंग रे क्लोजिंग रे 20,000 और फिनिश गुड्स अछि 43,700 ओपनिंग रे और क्लोजिंग रे 54 ताछटा आ किछ इंफॉर्मेशन देछि इनडायरेक्ट वेजेस देछि सेल्स देछि फैक्ट्री रेंट देछि ऑफिस सैलरी देछि जनरल एक्सपेंसेस देछि ऑफिस रेंट रेंट ऑफ शोरूम परचेज रॉ मटेरियल प्रोडक्टिव वेजेस प्लांट रिपेयर्स डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फैक्ट्री लाइटिंग सेल्समैन सैलरी प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट हम कॉस्ट भी बाहर करिया प्लस प्रॉफिट भी बाहर करिया ओके जेटू हमको सेल्स रो इंफॉर्मेशन देछि सेटू हमको प्रॉफिट भी बाहर करिया ओके तो फर्स्ट हम कोन फॉर्मेट एज यूजुअल फॉर्मेट यूज करिया तो फर्स्ट दिन में फॉर्मेट लिखू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जेटू हमको सब इंफॉर्मेशन देछि पूरा फॉर्मेट एटी हम यूटिलाइज करिवा काहे कि हम रॉ मटेरियल भी देछि वर्किंग प्रोसेस देछि फिनिश गुड्स भी देछि ओके तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स 30,000 तारे ऐड करिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज रॉ मटेरियल देखो राइट साइड है परचेज रॉ मटेरियल्स 1,20,000 1,20,000 ठीक है खोज रहा कैरेज ऑन परचेज या जदि देइथिबो कैरेज इनवर्ड तो देई नहीं अब या कोन करिया एदिना को प्लस कर देबा 1,20,000 प्लस 30 1,50,000 लेस करिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो ओपनिंग इतला तार सेपट डेट रे देखो 31 डिसेंबर 2022 35,000 तो आंसर इज 1,15,000 इटा मोर फर्स्ट आंसर वाला जोटा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंट ईयर एटिकी मटेरियल कंज्यूम रीच ओके अब रॉ मटेरियल कंज्यूम ने कौन करा जेते सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रा ऐड करा जस्ट लाइक वेजेस हेला प्रोडक्टिव वेजेस हेला राइट तो देखो गोटे राइट साइड है प्रोडक्टिव वेजेस होची डायरेक्ट अन प्रोडक्टिव वेजेस होची इनडायरेक्ट तो प्रोडक्टिव वेजेस के देछि 90,000 गोटी आइटम अछि तो 1,50,000 प्लस 90 2,05,000 और कौन वाला प्राइम कॉस्ट ओके 2,05,000 प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट अभी क्या करिया फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड जहाँ सब आइटम अच्छी ताको में पुट करवा देखिए कौन अच्छी देख इनडायरेक्ट वेजेस अच्छी कहली डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट रे इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री रे इनडायरेक्ट वेजेस अमाउंट अच्छी 9720 फैक्ट्री रेंट वाट जब फैक्ट्री लगाई सेटा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री रेंट रेट्स फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 7830 ऑफिस वाले जनरेशन ऑफिस रेट ऑफ शोरूम परचेज रॉ मटेरियल प्रोडक्ट वेजेस प्लांट रिपेयर प्लांट कोडी होजिबे फैक्ट्री रे तो प्लांट रो रिपेयर हिच एटा गोटे फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओके प्लांट रिपेयर्स 3420 नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 8360 फैक्ट्री लाइटिंग 7380 ओके एटी मोर थिला फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड कर देबा 0 8 6 14 2 16 3 19 2 21 1 2 3 5 3 8 4 12 8 20 7 27 7 2 7 9 8 17 3 20 27 9 36 36710 मोर फैक्ट्री खर्च होइछि 36710 ओके 2,05,000 प्लस 36710 36 5 41 2,41,710 2,41,710 ओके इटा कौन भाला मोर फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड
फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ओके ताडी मु ऐड करी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओके ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करी लेस करी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर देखो गोटे वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 प्लस करी 15,000 और लेस करी 20,000 ओके तो 2,41,000 रे 15,000 ऐड कले 56,000 56 से 20 2,36,000 2,36,710 गोटा कौन वाला वर्क कॉस्ट कौन वाला वर्क कॉस्ट ओके फर्स्ट मु बाहर करी रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर कर ऐड कली प्रोडक्टिव वेजेस जोटा कि मोर प्राइम कॉस्ट वाला प्राइम कॉस्ट रे फैक्ट्री ओवरहेड या सब फैक्ट्री रिलेटेड आइटम था ताकू सब ऐड कली तो कौन था इंडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स प्लांट रिपेयर्स डेप्रिसिएशन प्लांट फैक्ट्री लाइटिंग को ऐड कला पर मोर फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट वाला 36,710 प्राइम कॉस्ट रे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कले मोर बाहर फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड रे मु कौन कली ओपनिंग स्टॉक WIP प्लस कली क्लोजिंग स्टॉक WIP को लेस कला पर जो अमाउंट बाहला ताकू मु कौन कली वर्क कॉस्ट ओके अपन यार स्क्रीनशॉट नै परिबे ना मु एठी कर दोछि एटा कंटिन्यू करछि ओके मोर वर्क कॉस्ट केते बारछि 2,36,710 जोटा कि मोर वर्क कॉस्ट बारछि तापर मु ऐड करिवि जेतका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बस ऑफिस रिलेटेड खर्च राइट अभी क्या देखो ऑफिस रिलेटेड खर्च कौन देछि ना ऑफिस सैलरीज 15,030 general expenses 13,500 office rent 2,000 rent of showroom purchase plant ये तीन आइटम लेथिला 15, 30, 28 to 30,530 ओके 15 28 जो 30,530 अभी ऐड कर देवा 0,314 7 5 12 1 के 1 6 7 3 3 6 2,67,240 2,67,240 मोर कौन भाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस तुम ये कंटिन्यू करिवो ओके तापर प्लस करिवा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या फिनिश गुड्स देछि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओके ऊपर देखो फिनिश गुड देथिला 43,700 लेस करिवा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 54,000 ओके 2,67,240 रे प्लस करिवा 43,700 माइनस करिवा 54,000 तो आंसर 2,56,940 ओके इटा मोर भाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके तापर ऐड करिया सेलिंग ओवरहेड जहाँ सब सेलिंग खर्च होइछि सेलिंग गुड्स को सेल करबे जहाँ सब खर्च होइछि जस्ट लाइक कैरेज आउट एडवर्टाइजमेंट कमिशन ऑन सेल्समैन सैलरीज ये सब या रेंट ऑफ शोरूम देखो देखिए रेंट ऑफ शोरूम देखिए 1,200 रेंट ऑफ शोरूम 1,200 सेल्समैन सैलरीज आमर जे गुड्स सेल करछि ताको सैलरी हम प्रोवाइड करछे 7,650 और किछ आइटम नहीं तो 8,850 ओके 0,459 8 9 17 1 के 1 8 9 6 15 1 के 8 9 13 14
2,56,940 plus 8850 2,65,790 2,65,790 ओके এটা কোন वाला टोटल कॉस्ट ओके टोटल कॉस्ट जो गुड्स जो प्रोडक्ट आम बनाऊे तार कॉस्ट आम डिटरमाइन कले के 2,65,790 ओके प्लस से गुड्स को ऑलरेडी सेल कर दीचे तो ये रेकर्ड करिया प्रॉफिट ये रेकर्ड करिया सेल्स अमाउंट देखिए 3,25,000 ओके 3,25,000 कॉस्ट माइनस कर देवा डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट माइनस 3,25,000 तो प्रॉफिट इज 59,210 ओके कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आम कॉस्ट डिटरमाइन कले हमको सेल्स इनफॉरमेशन देखिए तो सेल्स रु आम कॉस्ट को माइनस कला जो अमाउंट वाला सेटा प्रॉफिट तो ये आम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करवा आगे फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर करवा रॉ मटेरियल कंज्यूम पर प्राइम कॉस्ट बाहर करवा प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करवा भारी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूपी लेस करिया क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूपी कले वर्क कॉस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करवा ऑफिस एक्सपेंस ऐड कला जो अमाउंट बाहर ताको हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहवा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस करवा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करवा तो से अमाउंट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिते सेलिंग ओवरहेड को ऐड कला बाहर टोटल कॉस्ट आउ सेल्स जो इनफॉर्मेशन सेल्स टू टोटल कॉस्ट डिफरेंस होची प्रॉफिट तो ये आम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करिया चलंतु आउ गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा आपनक बुक रो क्वेश्चन नंबर 18 Mr. Gopal furnishes the following data related to the manufacture of a standard product during the month of April 2023. Raw material consumed देछि, direct labor charges देछि, machine hours work 900 hours, machine 900 hours काम करछि और machine hour rate होछि per hour 5 rupees. Administrative overhead 20% of work cost, selling overhead 0.50 per unit produce is 17,100 और unit sold is 16,004 per unit. You are required to prepare a statement of cost, profit for the above saying the cost of production per unit, profit per unit. Okay, हमको cost of production per unit बाहर कर भी अच्छे और profit per unit बाहर कर अच्छे. Okay, आउ cost sheet बुक बनेगा. इटोरे इन CPU कर दवा cost per unit. First हमें कौन करें raw material consumed. Raw material consumed के दीजिए 15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम कौन ऐड करियो डायरेक्ट लेबर रॉ मटेरियल कंज्यूम ऐड करियो डायरेक्ट लेबर दीजिए 9,000 15,000 9,000 ऐड कले 24,000 जोटा कि मोर प्राइम कॉस्ट ओके प्राइम कॉस्ट रे ऐड करियो फैक्ट्री ओवरहेड कौन काम करे मेसीन काम करे भैया फैक्ट्री इनफॉरमेशन है मेसीन आवर्स वर्क 900 मेसीन 900 आवर्स काम कर ईच आवर को 5 रुपीज खर्च होती तो आम कौन क्या फैक्ट्री 900 इंटू 5 ओके जी घंटा मेसीन काम कर जी घंटा को पैसा खर्च होती मल्टीप्लाई करवा 900 आवर्स यूज होती पर आवर को 5 रुपीज स्पेंड करा ओके तो 900 इंटू 5 4500 28,500 कौन वाला এটা वर्क कॉस्ट ओके वर्क कॉस्ट देन कौन कर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन दीजिए 20% ऑन वर्क कॉस्ट तो 20/100 वर्क कॉस्ट मोर अच्छी 28,500 ओके 2850 5,700 5,700 200 8 13 14 34,200 এটা कौन वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ओके वर्क कॉस्ट रे मो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऐड कली ऑन वर्क कॉस्ट मोर वर्क कॉस्ट ला 28,500 तार 20% इज 5,700 तो 28,500 5,700 ऐड कली मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला 34,200 ओके क्वेश्चन इनफॉर्म दीची यूनिट प्रोड्यूस 17,100 ये जो हमें यूनिट प्रोड्यूस करछे एटा होची 17,100 यूनिट्स 17,100 यूनिट्स तो हमें कोटे बाहर कर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर कौन मोर जेति की प्रोडक्शन में खर्च होईची और जेति की यूनिट मोर बना होईची तो डिवाइड कर कौन पर यूनिट बाहर जो टोटल कॉस्ट होची 34,200 और यूनिट प्रोड्यूस होची 17,100 कटिला तो 2 रुपीस मोर कॉस्ट पर यूनिट होची 2 रुपीस ओके प्रोडक्शन रे मोर जो यूनिट प्रोडक्शन करछि पर यूनिट मोर 2 रुपीस स्पेंड होची ओके नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे ऐड हुए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस हुए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
ओके आड हुए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस हुए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश सर ये किसी इनफॉरमेशन देनी बट आमको गोटे हिडन इनफॉरमेशन देखो देछि कौन ना यूनिट प्रोड्यूस होती 17,100 मो पाखे प्रोडक्शन होगी के 17,100 यूनिट्स बट मुझे यूनिट सोल्ड कर 16,000 यूनिट सोल्ड कर तार मोर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अच्छी 17,100 रु 16,000 सोल्ड कर मोर 1,100 यूनिट्स कौन अच्छी क्लोजिंग स्टॉक अच्छी बट मोर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स किसी ना बट मोर क्लोजिंग स्टॉक के अच्छी 1,100 यूनिट्स के बाहर कली ना 17,100 प्रोडक्शन होता 16,000 टारू सोल्ड होती तो 1,100 पर यूनिट को कहते 2 रुपीज तो 1,100 टू 2,200 ओके 16,000 units the cost is 32,000 okay the कौन वाला cost of goods sold okay तापर देखला selling overheads जोरा कि selling expenses selling overhead देखि 0.50 पर यूनिट जेतेटा यूनिट हमें सेल कले सेते यूनिट को 50 पैसा पर यूनिट खर्च होइछ ता माने मो 16,000 यूनिट सेल करछि 16 into 0.50 is equal to 8,000 ओके तो मोर टोटल कॉस्ट आसला 40,000 इटा मोर टोटल कॉस्ट ओके देन प्रॉफिट देन सेल्स ओके प्रॉफिट सेल्स यूनिट सोल्ड देखो लास्ट ले यूनिट सोल्ड 16,000 एट द रेट 4 पर यूनिट 16,000 यूनिट को 4 रुपीज नाका पर यूनिट सेल कली तो 16 into 4 64,000 मोर प्रोडक्टर कॉस्ट हम डिटरमाइन करती 40,000 आउ ताकू सेल कली 64,000 तो डिफरेंस अमाउंट इज प्रॉफिट तो प्रॉफिट इज 64 माइनस 40 24,000 ओके ये मोर प्रॉफिट ओके हमको आउट कौन पचार प्रॉफिट पर यूनिट ना जी प्रॉफिट है और जी यूनिट सोल्ड है ओके प्रॉफिट के 24,000 केते यूनिट सोल्ड होती ना 16,000 तो 1.5 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट होती ओके हमको से पचार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट डिटरमाइन करदे आम प्रॉफिट फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट यहाँ हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो 2 रुपीज एंड प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड जो यूनिट आम सोल्ड कल तार प्रॉफिट आसला 14 रुपीज एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड से वर्ष प्रॉफिट रही 24,000 तो ये आम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस कॉस्ट शीट प्रिपेयर करिया चलतु आउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिया आपन को बुक रो क्वेश्चन नंबर 19 प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एंड कॉस्ट पर यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर्स बाय कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स व्यवहार करिया प्रॉफिट इनफॉरमेशन देछि ता तळे किछि एडिशनल इनफॉरमेशन देखो देछि द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जुलाई 2022 वाज 3,000 ए वर्ष 3,000 यूनिट प्रोड्यूस होइछि The stock of finished goods are 200 and 400 units on 1st July 2022 and 31st July 2022. तामाने opening stock of finished goods है 200 units, closing stock of finished goods है 400 units. Okay. The total cost for the units on hand on 1st July 2022 was rupees 2,800. हमको opening stock finished goods का value दे रही थी जो 200 units था तार value है 2,800. All these have been sold during the month. सब जाको sold भी है जाइए. Okay. तो हमें कौन बनेगा statement of cost बनेगा तो हमको फर्स्ट कॉल दरकार ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओके ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल स्टॉक और देख लिखा है 1st जुलाई 2022 3,000 तारे में ऐड करिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखो तो लिखा है रॉ मटेरियल परचेज 28,000 ओके कैरेज एंड परचेज नहीं तो 28 प्लस 3 31,000 लेस करिवा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओके क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल केते दिछि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 जुलाई 2022 4,500 26,500 ओके कौन वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और फर्स्ट आंसर बाहरी गला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जोटा कि 26,500 तारी मो ऐड करबी जेते डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके जस्ट लाइक तमरो वेजेस गोटे देखो रही मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ओके राइट साइड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस देछि 7,000 26 प्लस 7 33,500 जोटा कि मोर प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऐड कले मोर कौन बड़ा प्राइम कॉस्ट तारे मु ऐड करी फैक्ट्री ओवरहेड
जहाँ सब फैक्ट्री रिलेटेड आइटम ताको पुट करी ओके मोर देखो देखिए फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स ओके अमाउंट के देखिए फैक्ट्री रेंट 3000 depreciation on plant 1500 ओके और देखो देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट कहीं सर प्लांटर फैक्ट्री यूज हुए बट ये आम यहाँ इग्नोर करवा कहीं आम जिनसा बनाऊे ठीक अच्छे आम प्रोडक्शन में केते कस्ट होची बट मोर गोटे आसेट थिला बा मेसीन था सेल कला मोर लॉस है बट से मोर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नुहे ओके मुझे पेन बनाऊे पेन रे केते टंका खर्च होची सेटा मो ए पेन बनाइबार गोटे मेसीन अच्छी से मेसीन बिकिबार मोर लॉस है बट से कस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नुहे तो ताको आम इग्नोर करवा ओके तो डेप्रिसिएशन प्लांट है 1500 टोटल 4500 3000 प्लस 1500 38,000 कौन भला मोर वर्क कॉस्ट ओके वर्क कॉस्ट तापर ऐड करिवा ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओके जा सब ऑफिस रिलेटेड खर्च गोटे ऑफिस रेंट देछि ऑफिस रेंट इज 500 जनरल एक्सपेंसेस sorry general expenses 400 तो 500 plus 400 900 38,000 plus 900 38,900 जोड़ा कि मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर 38,900 मोटे इनफॉरमेशन देइथिला करेंट मंथ रे the number of units produced during the July 2022 was 3000 मैं 3000 units production करछि तो लिख दिली 3000 units मोर 3000 units रो कॉस्ट होछि 38,900 तो मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ना 38,900 डिवाइडेड 3000 ओके 38,900 डिवाइडेड 3000 12.966 आसुचे तो 12.97 ओके तापर हमें कौन करिवा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस पर कौन करिवा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करिवा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करिवा प्लस करिवा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करिवा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओके मोर पैराग्राफ देते ओपनिंग स्टॉक अच्छी 200 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक अच्छी 400 यूनिट्स ओके ओपनिंग स्टॉक वैल्यू गिवन थिला देखो लास्ट लाइन लिखा था द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स ऑन हैंड 1 जुलाई 2022 वाज 2800 तो प्लस करिया 2800 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्राइस देनी क्लोजिंग स्टॉक प्राइस टा कोटे हिसाब करू ना कॉस्ट प्राइस हमर कॉस्ट प्रोडक्शन केते थिला करंट ईयर ना 12.97 ओके तो 400 में इंटू कौन करिया 12.97 ओके 400 रे इंटू करिया 12.97 5187 3000 प्लस 200 3200 तो मो पाखे 2800 यूनिट्स अच्छी जोड़ा कि मु COGS कहबी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मु 38,900 रे 38,900 प्लस 2800 ओपनिंग स्टॉक को ऐड कली माइनस करी क्लोजिंग स्टॉक्स 5187 36,513 गोटे कौन बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तापर ये मुझे कंटिन्यू कर दूची मोर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाहर 36,513 कौन बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोटा कि COGS तापर प्लस करवा सेलिंग ओवरहेड कौन ऐड करवा सेलिंग ओवरहेड जहाँ सब सेलिंग रिलेटेड खर्च ताको हम ऐड करवा क्वेश्चन गोटे इनफॉरमेशन देछि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट अमाउंट अच्छी 600 पुणी अगेन क्वेश्चन कर सर डिस्काउंट ऑन सेल देछि सेल्स कला डिस्काउंट अभी आम जिनस बनेने जिनस टोटाल कॉस्ट डिटरमिन करें तो डिस्काउंट को आफ्टर सेल्स ओके तो सहीटा आम से एक्सपेंसेस को हमें कौन करिया कॉस्ट इग्नोर करिया जो आम
कॉस्ट डिटरमाइन करवा तो डिस्काउंट ऑन सेल्स को हमें इग्नोर करवा कारण से आफ्टर सेलिंग एक्सपेंसेस ओके सेल्स कर सारा पर हमें जो डिस्काउंट दबा ताकू कह आफ्टर सेलिंग एक्सपेंसेस क्लियर अभी आम कौन बाहर करचे कॉस्ट रो प्राइस डिटरमाइन करचे तो 36,500 प्लस 600 37,113 এটা कौन भाला टोटल कॉस्ट कौन भाला टोटल कॉस्ट 37,113 नेक्स्ट प्रॉफिट देन सेल्स आम से प्रोडक्ट को केते सेल्स करचे सेल्स इम्पोर्टेंट अच्छे 50,000 ओके सेल्स रु मु कौन करी कॉस्ट को माइनस करी 37,113 मोर कॉस्ट माइनस 50,000 तुम प्रॉफिट आसूची 12,887 ओके तो प्रॉफिट है 12,887 ओके बुझी आसला तो ये आम कॉस्ट डिटरमाइन करवा फास्ट आम कौन बाहर कले ना रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर कले रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैन्युफैक्चर को आड कले जोटा कि मोर प्राइम कॉस्ट बाहर प्राइम कॉस्ट मुझे सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस ताकू आड कली जोटा कि मोर बाहर 38,000 जोटा कि वर्क कॉस्ट मोर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आड कली जोटा बाहर मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोटा होता 38,900 तो करेंट मंथ में 3,000 यूनिट प्रोडक्शन कर 3,000 यूनिट कॉस्ट होची 38,900 तो मोर गोटाकर यूनिट केते ना कॉस्ट पर यूनिट 38,900 बाय 3,000 12.97 मोर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 200 यूनिट तार वैल्यू देथिला 2800 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मोर पाखरे 400 थिला तार हम कॉस्ट प्राइस रेकॉर्ड कले 12.97 रे 5187 आमन मो पाखरे 28,800 गुड्स को हमें सेल कर देचे और एटा केते रहला टोटल जार कॉस्ट ऑफ गुड्स होची 36,513 ताले सेलिंग ओवरहेड खर्च हमें कौन एडवर्टाइजमेंट खर्च करचे 600 तो टोटल हमें से कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइन कले 37,113 और से प्रोडक्ट में सेल्स करचे 50,000 तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट ये किसी एक्सपेंसेस को हमें इग्नोर कले जमी आम गोटे लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट डिस्काउंट ऑन सेल्स एटा को कॉस्ट डिटरमाइन कर इग्नोर करवा तो ये हमें कॉस्ट शीट फाइंड आउट करवा आई होप आप वीडियो भल लगे आउ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर आज वीडियो माध्यम आम कॉस्ट शीट केमी प्रिपेयर करे ता विषय जानले और ता रिलेटेड किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपंकर किसी डाउट थबो तो मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे आज ये वीडियो माध्यम आम कॉस्ट शीट चैप्टर को एंड करचे और नेक्स्ट पार्ट रे और नेक्स्ट चैप्टर विषय डिस्कस करिबा थैंक यू।